Jai Hind doston, good evening all. Let's begin with today's session. So look at the first question. With reference to the Operation Thunder 2025, consider the following statements. The first statement says it is coordinated by Interpol and the World Customs Organization. Absolutely correct. The second statement says India's nodal agency for the operation is the Wildlife Crime Control Bureau, which is a statutory body within the Wildlife Protection Act of 1972. Absolutely correct. The third statement says the operation is funded solely by the European Union. देखिए जब भी इस तरह के एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स आते हैं, please be attentive. This operation is not funded solely by the European Union but by other organizations as well. So the third statement is incorrect here. Which of these statements given above is oblique are correct? Correct answer would be A for Ahmedabad 1 and 2. Now let's move on to the explanation part. So look at the explanation part. So Wildlife Crime Control Bureau, it is a statutory and multidisciplinary body established by the Government of India to combat organized wildlife crime across the country. It was constituted on 6th of June 2007 under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, right? So it is a statutory body set up under the Wildlife Protection Act of 1972. I hope you guys understood this. Now let's move on to the next question. So look at the second question. Methane is considered a critical target for climate mitigation primarily because the first statement says it has a much higher global warming potential than the carbon dioxide. In the short term, it is absolutely correct. Second statement says it is a major cause of the landfill fires. Absolutely correct. The third statement says a significant portion of India's methane emissions originate from the waste sector. Again correct. देखिए मीथेन एमिशन के लिए जो सेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें सबसे पहला नंबर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, और एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में फिर अदर सेक्टर्स आते हैं, राइट? सो डू रिमेंबर वेस्ट सेक्टर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे मीथेन एमिशन में. क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट? सो करेक्ट आंसर वुड बी डी फॉर Delhi 1, 2 and 3. Now look at the explanation part. So methane is 84 times more potent than CO2 over a 20-year period. Methane accumulation fuels landfills fire. Around 15% of India's methane emissions come from the waste sector, making it a key mitigation opportunity. अब जैसे हम बात कर रहे थे तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में, तो सबसे पहले जो मेजर सोर्सेज हैं, मेजर सोर्सेज क्या हैं? एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद द लाइव स्टॉक एंड पर्टिकुलरली जो राइस एंड पैडी फील्ड्स होती हैं उससे मीथेन गैस जो है वो ओमिट होती है, वो रिलीज होती है. देन द फॉसिल फ्यूल्स एंड फाइनली द वेस्ट. अब यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे अबाउट द ग्लोबल मीथेन प्लेज विच वाज लॉन्च्ड इन द COP 26 in 2021, right? Do remember that India is not a member of this global methane pledge, right? So India's stance की बात करें, so not a signatory but has national strategies for the methane reduction in the rice cultivation, system for the rice intensification and the direct seeded rice. ये दो मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए मीथेन गैस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. ये भी हाल ही में न्यूज़ में था. सो एग्जामिनर मे आस्क दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3. With reference to India's nuclear power expansion strategy, under the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, Shanti Bill 2025, consider the following statements. See, it's a very important bill, और इस बिल के थ्रू सरकार न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूडिंग द फॉरेनर, द फॉरेन प्लेयर्स एंड द डोमेस्टिक प्लेयर्स, तो प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे लाइक एक्सेस दिया जा रहा है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में. सो एग्जामिनर मे आस्क दिस टॉपिक in the upcoming prelims examination. So look at the first statement. Nuclear energy currently contributes around 10% of India's electricity generation. This statement is incorrect. Not 10%, it is only 3%, right? So the first statement is absolutely incorrect. और याद रखिएगा, when it comes to the overall installed capacity, तो installed capacity की बात करें तो न्यूक्लियर पावर का जो contribution है that is only 1.5%. वहीं अगर हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो न्यूक्लियर पावर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली 3%. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट.
India aims to achieve 100 gigawatt nuclear capacity by 2047. Second statement is correct. Third statement says the small modular reactors are envisaged as part of the future nuclear expansion plan. This is absolutely correct. अभी recent budget में इसके लिए एक बड़ा amount allocate किया गया था. क्या था वो major sum of amount? मुझे आप comment box में जरूर बताइएगा. The question is which of the statements given above is oblique incorrect. तो यहाँ पे incorrect statement पूछा हुआ है. Second और 3 दोनों correct हैं. तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा only 1, right? So this statement number 1 is incorrect here. Now let's move on to the explanation part. So look at this one. Nuclear contributes only 3% electricity generation. ये टारगेट जो है 100 गीगावाट का है बाय 2047. At least 5 indigenous SMRs, small modular reactors, are planned by 2033, right? तो बेसिकली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं उनका साइज क्या होता है 300 मेगावाट से 300 मेगावाट या फिर इससे बिलो, याद रखिएगा. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाट्य शास्त्र, an ancient Sanskrit treatise dealing with drama, dance, music, aesthetics, is traditionally attributed to which of the following sages? The correct answer is B for Bombay, that is Bharat Muni. So this was the news recently. So you can see here, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है पहले भी. So नाट्य शास्त्र is the foundational text of Indian performing arts composed by sage Bharat Muni between 2nd century and 2nd century BC and the 2nd century CE, right? So do remember this. चलिए, now let's move on to the next question. Look at the question number 5. With reference to the Shanti Bill 2025, consider the following statements. First statement, the bill repeals both the Atomic Energy Act of 1962 and the Civil Liability for Nuclear Damage Act of 2010. Absolutely correct. The second statement says it grants a statutory status to the Atomic Energy Regulatory Board and makes it accountable to the Parliament. Again correct. The third statement says it mandates unlimited civil liability. किस तरह का statement है? Absolute statement. So it mandates unlimited civil liability on nuclear plant operators in case of severe nuclear accidents. The third statement is absolutely incorrect. Question is, which of these statements given above is oblique correct? So correct statements जो है वो कौन से हैं? 1 and 2 means A for Ahmedabad would be the correct answer. Now let's move on to the explanation part. The revised liability framework, it repeals the CLND Act of 2010. It abolishes the concept of suppliers liability. इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट न्यूक्लियर सेक्टर में, इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में जो है वो नहीं था, तो इस क्लॉज को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया है. ऑपरेटर्स अलोन आर लाइबल with capped compensation based on the plant size. तो अगर plant size 3600 मेगावाट एंड above है तो उस केस में यहाँ लाइबिलिटी है 3000 करोड़ रुपीस की. अगर 1500 टू 3600 मेगावाट के बीच में अगर साइज है न्यूक्लियर रिएक्टर का, इन दैट केस 1500 करोड़ रुपीस का लाइबिलिटी होगा, और स्मॉल रिएक्टर्स के केस में 100 करोड़ रुपीस तक का लाइबिलिटी है. मैक्सिमम पेनल्टी कैप्ड एट 1 करोड़ रुपीस इवन फॉर द सीवियर सिक्योरिटी ब्रीच. क्लियर? तो नेग्लिजेंस या फिर सीवियर ब्रीच के केस में जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो कितनी रखी गई है? 1 CR रखी गई है. सो डू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट क्लॉजेस. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. AH-64E Apache attack helicopters recently inducted into the Indian Army is best described as what? The correct answer is B for Bombay. It is a US made multi-role combat helicopter used for reconnaissance and precision strikes. So correct answer is B for Bombay, right? ये काफ़ी डिलेड हुई है इसकी डिलीवरी. 2024 में इस डिलीवरी को पूरा हो जाना था, लेकिन काफ़ी टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में, इस पूरे जो कैप था इसको डिलीवर होने में. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. सो लुक एट दिस वन, Apache AH-64E. It is a US origin Boeing manufactured advanced multi-role combat helicopter used for reconnaissance, precision strike and close air support missions, right? याद रखिएगा. So the first batch was delivered after a delay of nearly 15 months from the original delivery schedule of the May 2024, primarily due to the global supply chain disruption. Clear? So correct answer क्या होगा? B for Bombay. Now let's move on to the next question. With reference to the National Digital Livestock Mission, consider the following statements. The first statement says it aims to create a nationwide digital database of the livestock
and the related services. Absolutely correct. The second statement says it seeks to improve livestock productivity and the breed improvement suited to India's agroclimatic diversity. Again correct. The third statement says it is implemented only in selected high livestock density states. It is absolutely incorrect. जब भी इस तरह के absolute statements आए, please be attentive. Question is, which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be A for Ahmedabad. That would be 1 and 2. Right? Now let's move on to the analysis part. The Bharat Pashudhan platform, it is India's digital ecosystem for the livestock management, a key component of the National Digital Livestock Mission, using mobile apps for the field workers to tag the animals with unique IDs, Pashu Aadhaar, and record health breeding, vaccination, ownership changes, and the milk yield, creating a unified digital database for the smarter livestock care, farmers empowerment and economic growth. Right? Now let's move on to the next question. Consider the following statements. ये UPSC 2022 का question है prelims का. The first statement says a bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India. No, that's not the case. Money bill के केस में या फिर अगर आपको नई states का formation करना है, in that case प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में जरूरत नहीं है. सो दी स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट हियर. लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट. व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, it is obligatory for the president of India to give his or her assent. Absolutely correct. See, the president of India, यहाँ पे the president of India can neither hold the bill nor return the bill for the reconsideration. तो constitutional amendment bill में president of India will have to give his or her assent. Second statement is absolutely correct. Look at the third statement. A constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for the joint sitting. दोनों ही statements यहाँ पे जो देखिए आप दो statements को यहाँ पे club किया हुआ है. So a constitution amendment bill must be passed by both the houses by a special majority, correct, and there is no provision for the joint sitting, also correct. Joint sitting सिर्फ और सिर्फ किस पे हो सकती है? In general जो normal bills होते हैं उस पे हो सकती है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है. राइट? एंड टिल डेट अभी तक के 3 जॉइंट सिटिंग्स हुई हैं. पहली जॉइंट सिटिंग हुई थी किस पे? ये हुई थी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पे 1962 में. सेकंड जो है सेकंड सिटिंग हुई थी बैंकिंग सर्विसेज एक्ट पे, ये 1977 के आसपास थी, 77-78. और थर्ड जॉइंट सिटिंग थी पोटा पे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 पे. तो टिल डेट सिर्फ 3 जॉइंट सिटिंग्स हुई हैं. डू रिमेंबर, ऑल्सो रिमेंबर कि जॉइंट सिटिंग में जो बिल्स हैं दे आर पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी. क्लियर? एंड जॉइंट सिटिंग जो है इसको कॉल ऑन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. लेकिन इसको प्रिसाइड ओवर कौन करता है? स्पीकर लोकसभा. डू रिमेंबर ऑल दीज प्रोविजंस. क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे 2 and 3. मतलब बी फॉर बॉम्बे वुड बी दी करेक्ट आंसर. राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी explanation part. Right? It is clearly given here. So read कर लीजिए इसको, मैंने आपको already explain कर ही दिया है. Now let's move on to the next question. Question number 9. With reference to the National Legal Service Authority Act, consider the following statements. First statement says it has been constituted under the Legal Service Authorities Act of 1987. Absolutely correct. Second statement says it aims to provide free legal services to the weaker sections of the society and to organize lok adalats for the amicable settlement of the disputes. Absolutely correct. The third statement says the Chief Justice of India, CJI, is the executive chairman of the NALSA. This statement is incorrect. See, जो CJI है वो पेट्रॉन इन चीफ है, ना कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन हो सकता है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को CJI या तो नॉमिनेट करते हैं या तो वो पिक करते हैं. राइट? और ये बेसिकली सीनियर मोस्ट जज होता है, सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. या तो ये करंट जज भी हो सकता है और ये रिटायर्ड जज भी हो सकता है, फॉर्मर जज भी हो सकता है. याद रखिएगा इसको. सो CJI क्या होते हैं? वो पेट्रॉन इन चीफ होते हैं, ना कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. राइट? और सिमिलरली अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पे भी यही अथॉरिटी, इसी तरह की अथॉरिटी होती है. तो नालसा जो है इट इज एट द सेंटर लेवल, देन इसके बाद में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, इट इज एट द स्टेट लेवल, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी. क्लियर?
तो लीगल एड के कॉन्सेप्ट को, जो लीगल एड है उसको प्रमोट करना, उसको फैसिलिटेट करने का काम जो है ये नालसा का है। सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा इसको। क्लियर। तो यहाँ पे सिमिलरली स्टेट में पेट्रॉन एंड चीफ कौन हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, पेट्रॉन एंड चीफ हो जाएंगे। और जो सीनियर मोस्ट जो होंगे, सेकंड सीनियर मोस्ट, वो क्या बन जाएंगे, या तो सेकंड सीनियर मोस्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, जिसको भी नॉमिनेट करें वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। इज दैट अंडरस्टूड दोस्तों? चलो, क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्वांटम पूछा हुआ है, हाउ मेनी, तो कितने स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं। तो 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पे, 1 and 2, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, ओनली 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। The National Legal Service Authority has been constituted under the Legal Service Authorities Act of 1987. It is a statutory body. The Chief Justice of India serves as the patron-in-chief, not the executive chairman. The executive chairman is a sitting or a retired judge of the Supreme Court, selected by the Chief Justice of India. Right? Currently कौन है? Currently NALSA's executive chairman is Honorable Justice Vikram Nath. Clear? So every state has established a state legal service authority to carry out the NALSA's rules and orders, as well as to provide the free legal services, free legal aid services, right? याद रखिएगा इसको. In every district legal service authority has been constituted to implement the legal services program in the district. So we are done with the explanation. आगे move करते हैं next question की तरफ. The question number 10 is Vellore Bird Sanctuary, recently news for the arrival of the migratory birds, is correctly described by which of the following statements? See, it is a Ramsar site located around the Periakulam Lake and lies on the Central Asian flyways, which is connecting Siberia with the Indian Ocean. Clear? So, याद रखिएगा यहाँ पे Central Asian flyways, it passes through India, right? Central Asian flyways, it passes through India. So, correct answer क्या हो गया यहाँ पे? A for Ahmedabad. And this site, this Vellore Bird Sanctuary, it is situated in the state of Tamil Nadu, right? तो कहाँ पे है? It is situated in the state of Tamil Nadu, right? So look at the explanation. Vellore Bird Sanctuary is built around Periakulam Lake, designated as a Ramsar site in 2022, and lies on the Central Asian flyway, making it an important stopover for the migratory birds. Clear? So do remember these statements. ये भी न्यूज में था, इसको हमने द हिंदू के आर्टिकल से पिक किया है. So I hope you guys understood the entire concept. Guys, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.